Hello everyone, this is the third week on the 4-week certificate course on PoSH, and in this video we'll be discussing the concept of committees under this act. Now, whether it is an organization or at district level, there are committees constituted who look and address the issue of sexual harassment, and अगर उनके पास कोई sexual harassment की complaint आती है तो वो उसमें इंक्वायरी करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, and they also suggest appropriate actions जो भी एम्प्लॉयर है या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो ले सकता है इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब कमिटीज दो तरह की हैं इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। पहली तो है इंटरनल कमिटी जो कि सेक्शन 4 में डिस्क्राइब्ड है, या और दूसरी है लोकल कमिटी जो सेक्शन 7 में डिस्क्राइब्ड है। जो कॉम्पोजिशन है इनका, पहले तो हम इंटरनल कमिटी जानते हैं कब बनती है। इंटरनल कमिटी इज फॉर्मुलेटेड wherever an organization has more than 10 employees. Say for example, there is organization A जिसमें 10 employees है, it is mandatory for them to have an internal committee. Say for example, there is an organization B जहाँ पे 9 employees है, then they do not need to constitute an internal committee. So any organization with 10 or more employees will constitute an internal committee. इंटरनल कमेटी का काम क्या होगा? उनका काम ये होगा कि अगर उनके पास सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन आती है तो वो उसे एड्रेस करें, उसमें इंक्वायरी करें एंड फाइंड आउट द ट्रूथ, एंड द वर्क इज ऑल्सो टू increase gender sensitization in the particular organization, as well as it is the employer's duty as well. Now coming to the constitution, there are a minimum of 4 members in an internal committee. फर्स्टली अ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोल सकते हैं। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये जो फीमेल एम्प्लॉय होगी हु इज वर्किंग एट अ सीनियर लेवल, शी विल हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद इश्यूज ऑफ सेक्शुअल harassment. Only then she'll be appointed. Then we have at least 2 members, and these 2 members will preferably be from the organization, that is, they'll be the employees, and they'll be committed to the cause of women, या फिर ये वो लोग होंगे जो सोशल वर्क करते हो और they have legal knowledge. Now, until now we have discussed 3 members, that is a chairperson and 2 members from the organization, and then the third member is an independent member, that is an external member. अब ये कोई भी एनजीओ या फिर एसोसिएशन से हो सकता है, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज से फेमिलियर हो, उससे रिलेटिंग लॉ जानता हो, या फिर एनीवन हु सपोर्टिंग द कॉज ऑफ women. So a senior female employee, 2 people from the organization, and a member from NGO or association who is working for the cause of women. So these 4 members will constitute the internal committee. अब इनका टर्म क्या होगा? These members are appointed for a period of 3 years from the date of nomination. So they're nominated today. So आज से 3 साल तक ये लोग अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, and after 3 years they'll have to leave the office. Then when we talk of allowance, now allowance जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स को मिलता है इन केस ऑफ इंटरनल कमेटी। क्या अलाउंस मिलता है? सो रूल 3 जो है पॉश रूल्स का, वो बताता है कि 200 रुपये पर डे फॉर व्हेन दे आर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर इंक्वायरी दे विल बी पेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनके आने जाने का कोई खर्चा हो रहा है, या फिर मान लो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ रहा है, वेदर इट इज़ अ फ्लाइट और बस और इफ़ देयर इज़ अ ट्रेन, तो वो भी उन्हें रीएम्बर्स किया जाएगा। देन वी हैव लोकल कमिटी। अब लोकल कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में 5 लोग होते हैं। लोकल कमिटी जो है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी ब्लॉक और तहसील और तालुका जो हम शब्द यूज़ करते हैं इन रूरल एरियाज, और वार्ड और म्यूनसिपैलिटी द वर्ड दैट वी यूज़ इन अर्बन एरियाज। सो क्या होगा कि हर ब्लॉक, तहसील, वार्ड या म्यूनसिपैलिटी में एक लोकल कमेटी होगी। इनका भी सेम काम है जो आईसी का है, दैट इज़ टू एड्रेस द इशू ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, एंड अगर उनके पास कोई कंप्लेन है तो उसमें इंक्वायरी करना एंड उसकी रिपोर्ट बनाना एंड टू सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स, राइट। Now, what happens is, if an organization does not have 10 employees,
देयर आर ओनली 9 एम्प्लॉयज, तो कहाँ जाएंगे लोग कंप्लेन करने के लिए? डज द वुमेन बी क्वाइट? डज शी नॉट डू एनीथिंग? नो. टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू लोकल कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें 5 लोग होते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, लोकल कमिटी में देर आर 5 members, so at any moment at least half or more than half, that is the better word, more than half of the people must be women. So अगर 5 लोग हैं लोकल कमिटी में, then at least 3 must be women. अब इसके कॉम्पोजिशन में there's an ex officio member. Now this is the officer जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू से डील करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर. देन वी हैव 1 member जो कि किसी भी ब्लॉक या तहसील या तालुका से नॉमिनेट किया जाता है, जो कि औरतों के लिए काम कर रहा होता है. देन वी हैव 2 members. अब इन 2 members में से एटलीस्ट वन इज़ अ वुमेन एंड एटलीस्ट वन इज़ समवन हु हैज़ background of law or legal knowledge, and they are nominated from NGOs or associations or person who are familiar with the issue of sexual harassment or they work for the cause of women. And जो इसका chairperson है, that person is from amongst the eminent women in the field of social work who is also committed to the cause of women. So there are a total of 5 members, and more than half, that is at least 3 members, are always female. The term of employment is also the same, that is of 3 years, and allowance is paid to them as is prescribed by the district officer. Now, removal. Now, when we talk of removal, there are certain grounds given for both IC and LC, and the grounds are same. So there are 4 grounds. पहला तो है if any member is found contravening the provisions of section 16. So section 16 जो है वो ये बोलता है कि कंप्लेन से रिलेटेड या फिर इंक्वायरी जो आप कर रहे हो इनटू अ पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे. सो इफ एनी मेंबर इज फाउंड ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, देन ही शैल बी रिमूव्ड. Or if any person is convicted of an offense or there is an inquiry going on against him in regarding to any offense, then he'll be removed from his post. If he has been found guilty in any disciplinary proceedings या फिर कोई disciplinary proceeding चल रही हो उसके against, then he'll be removed. Or say for example today he is a member of IC, or he holds a good particular position and he has abused that power, then he'll also be removed from his position in the IC or the LC, that is the internal committee or the local committee. Now this was about the constitution, the term of employment, allowance and removal of the particular members of IC and LC. That is it for this video, and in the next video we'll discuss a little more about the concept of external member and why there is a need of having an external member in a particular committee. Thank you.